is something I want to be, कि मैं ये बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में. I think that is something that is always changing. There are some key passions and key interests जो हैं मेरे, जो मुझे पहले से पता है कि these are things that I really love doing. These are things that I really want to work. Identify your passions, multiple, because जितने ज़्यादा आपके passion हैं, you can't expect कि आप अपने आप को restrict कर रहे हैं एक ही passion में. You can't expect कि मेरी सिर्फ एक ही होगी passion, because हर किसी के different interests होते हैं. At the end of the day, what's important is you're doing what you really love doing. The number one secret to managing time is the time that you're spending. You have to be spending it on things that you like doing. I love doing all the things that I was doing. तभी मेरे से time management. आप goal setting करें for the long term कि आप 50 years में आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से. 25 years में आप क्या चाहते हैं. 20 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, 6 months, 3 months, and 1 month. If you remind the brain again and again of what your goal is, then only will your brain feel that constant drive and motivation on a constant basis to achieve that goal. You will go to a good university, वहाँ पे उस university में आपको opportunities अच्छी मिलेंगी. But the end goal of those opportunities and of that university should always be कि वो opportunities आपकी character को build करें. So क्या डिफरेंट लगा यहाँ पे स्टडी में क्या डिफरेंस था, वहाँ स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है स्टैनफोर्ड पे में, और एटीट्यूड्स का डिफरेंस कैसे है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एटीट्यूड? आपको लगता है हमारा एटीट्यूड बीइंग स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक होता है, अच्छा होता है? I definitely think there's an innumerable wealth of talent here in Pakistan as well. Honestly, some of the smartest, most talented kids in the world go to universities here in Pakistan. I think one of the only key differences is that जो आपके सबसे talented students हैं पाकिस्तान में, वो सारे बाहर क्यों जा रहे हैं? Is because बाहर आपकी opportunities ज़्यादा होती हैं. जो universities हैं, they aren't so much better कि वो for example आप theoretical physics आप for example पढ़ रहे हो, तो ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप ऑक्सफोर्ड जाके थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ें, तो हाँ probability is they will teach it better, बट ये नहीं है कि they'll teach it so much better than you're going to learn at let's say यहाँ पे नस्ट में या लम्स में या जीकी में. वो क्वालिटी का है फ़र्क, बट इतना ज़्यादा नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर का भी डिफरेंस है कि you're meeting all of these different people from different backgrounds, एंड अपॉर्चुनिटीज़ का भी इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जो आपके सबसे टैलेंटेड हैं यहाँ के स्टूडेंट्स वो रह नहीं रहे, एंड इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, राइट? कि जो पाकिस्तान की टैलेंट है, इट्स नॉट स्टेइंग इन द कंट्री टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस. उनका यही इरादा होता है कि हम निकल जाएं जितनी जल्दी हम निकल सकते हैं, हम बाहर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ें. या यू फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे पे आपकी बेहतर होती है, वहाँ पे सहूलियात बहुत बेहतर होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपको मिल जाती है. आपके जो सारे पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, दे वो ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जाते हैं, लंदन जाते हैं ना सारे. सो द पॉइंट that I'm trying to make is कि वहाँ पे opportunities बेहतर हैं. It's not that they're markedly better as institutions. It's just that the opportunities are better. तो मेरा खुद भी यही इरादा है कि instead of going along with the flow कि हाँ यार मुझे opportunity मिल गई है बाहर, मैंने बाहर ही रहना है, मेरा भी खुद इरादा यही है कि वहाँ पे undergrad करके मैं 1-2 साल तक मैं वापस आ जाऊँ पाकिस्तान, बिकॉज मेरा एंड गोल यही है कि आई वांट टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस. That's the best part of the show today. That you have heard this thing from a youngster, from someone who has a lot of energy and who is willing to make some changes, make something which is worth considering. मुझे ये बताओ कि जैसे you said कि हर जगह पे problems हैं more or less, and you are settling into another culture, into another society. तो उसमें क्या क्या challenges अभी तक आए हैं या आ रहे हैं या पहले आए initially और अब वो थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं? Stanford's made it, they've gone out of their way to make it really, really easy for me. For example, dining halls में वो exclusively वो halal food serve करते हैं. I don't have to go out of my way to get halal food. उसके अलावा they're very open, very tolerant.
of different backgrounds. मैं पाकिस्तान से आया हूँ. मेरे batch में I have a batch of 1600 people, 1600. ये सिर्फ freshman batch है, and इस batch में there's only 5 people from Pakistan, right? And it's amazing how tolerant, how open and respective they are towards other cultures and other personalities. And honestly, it's become a second home to me over the last year. Obviously, up shift when I've never been to the US before a year ago, but the transition was made very easy by the university, by the people there. And it's honestly been I've taken time to adapt, but it's been a good year. Right. So, which of this statement you think is true in terms of how to achieve one's target goals? That you have to be exceptionally brilliant student, that you must be a bookworm, that you must be a very well-rounded personality and you manage time very well. And other way is that you work really hard, or the cliched one that it all depends on the luck. I think there's a little bit of everything here. I think the most important thing here is that you have to be hardworking. Yeah. बाकी चीजें हो ना हो, I don't consider myself the smartest person. I consider myself more hardworking than smart, right? पता है एक दफ़ा मेरे एक teacher है, I was in class 9 and this is something that always remained with me. That he asked me once कि I was one of the good students. तो teachers होते हैं, आपको उनको भी पता होता है कि आप किस तरह के students हैं. So once he asked in the class कि what do you think that an intelligent person will achieve more in life or a hardworking person will? Or the person who is more intelligent will be a more successful person, or the one who will be hardworking. So हमारा instant answer, क्योंकि उस टाइम पे we were in grade 9th or 8th probably. So एक instant answer most of them had कि जो ज़्यादा intelligent है. So then he actually made us realize through a lot of examples कि it is not necessary that you are very brilliant and you are very intelligent and even only then you are successful. Hard work really pays off at the end. I 100% agree. I think hard work is the most important thing. Obviously, intelligence does play a factor. Luck plays a huge factor. Major admission where I attribute it to luck more than anything else, because after me, there's for every one competent applicant who's accepted to a big university in the US, there's 5 more that are rejected. Okay. And I had to work to get myself to that platform, but आगे lottery ही होती है. So luck is a huge factor. Luck is a huge factor in life. आपको opportunities भी जो मिलती हैं वो luck के तौर पे मिलती हैं. Luck is a huge factor. But you can never leave things to luck because luck का आपको पता नहीं होता. जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, that is hard work. And obviously intelligence plays a factor, but more than intelligence, hard work is the biggest factor. And you give you 100%, even more than 100%. Exactly. So going back to your previous question, whether you are a bookworm, whether you're completely academically oriented, आप रहे academically oriented, if that's what your passion is, if you're super academically oriented, आप research करना चाह रहे हैं, you want to win the Nobel Prize in maths, you want to win the Nobel Prize in physics, that's your your end goal, तो आप करें. But to get there, you need hard work. Yes. Intelligence चाहिए, sure, but not as much as you need hard work. And hard work हो तो आप कर सकते हैं. If you're not a bookworm, if you're well-rounded, you want to do all of these different things, maybe you have to work hard. अच्छा मुस्तफ़ा, हमें ये बताओ कि the main part of it कि अगर कोई भी students हैं जो कि they are intending to apply and target US universities, तो उनका क्या रोड मैप होना चाहिए, उनकी क्या टाइमलाइंस हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टाइम ऑफ द ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, और उनको कितना टाइम पहले दे शुड प्लान, और प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है उसमें. सही है. So one thing to keep in mind is कि जो FSC का second year है और जो A levels का second year है, those are the years in which you apply. So your last year of high school basically, that is the year in which you apply to college बाहर. And the time frame is कि अगर आप there's a early application. It takes almost a year. So so what happens is that the application is submitted in December.
If you want to apply early, उसका भी application November 1st को due होता है, and then December 31st को regular आपका application. And this is, we are talking about when you are directly applying to universities. You're directly applying to them through this application called the Common Application website. It's called the Common Application, and it basically allows you to apply to 20 different universities in the US, up to 20 different universities in the US. और उसका deadline होता है November 1st को, in which you can apply to one university early, and then again December 31st को, when you apply to the rest of your universities, बाकी जो आपकी 19 universities हैं. So on that timeline, कीपिंग इन माइंड कि अच्छा जो मेरा फाइनल ईयर है उसके दिसंबर में मैंने ये करना है, उससे पहले आपने कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए. उनमें से एक चीज़ SAT हो गया, या SAT का अल्टरनेटिव होता है ACT. उन दोनों चीज़ों में से आप कुछ करें. उसके अलावा आपके वैसे ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, चाहे वो O लेवल्स के हों या मैट्रिक के हों. और ये है कि आप एक्टिविटीज़ करें जो आपके, हम पहले बात कर रहे थे पैशंस के बारे में, जो आपके हैं पैशंस, आप उनकी तरफ आपने क्या क्या किया. सो बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उनका काफ़ी होलिस्टिक एप्लीकेशन प्रोसेस है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट योर एकेडमिक्स, दे लुक एट एवरीथिंग एक साथ करके. योर असाइड फ्रॉम एकेडमिक्स आपका जो एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, एंड योर कम्युनिटी सर्विसेज आल्सो, योर कम्युनिटी सर्विस एज वेल. सो ये सारी चीज़ें वो एक साथ देखते हैं, एंड देन दे सेंड यू एन ऑफर फॉर एडमिशन. So just in terms of thinking about this entire process, I would definitely recommend कि आप you know from 2 years in advance, 3 years in advance आप सोचना शुरू कर लें इसके बारे में. But always keeping in mind कि the end goal should not be to get into college. You should not be कि अच्छा यार मैंने घुसना है. I don't want to get. It should never be कि अच्छा मैंने college घुसना है. It should be कि I'm going to do all of these things. ये जो मेरे passions हैं, मैं passions को develop करूँगा, मैं अपने आप को develop करूँगा. साथ साथ मैं उसकी भी मैं CV बना लूँ ताकि मेरा एडमिशन हो जाए, वो अपॉर्चुनिटी भी मिले. बट इट शुड नेवर बी द एंड गोल कि मैं सिर्फ उसके लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ. और जैसे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आईवी लीग्स को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं करें. इट इज़ व्हाट यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट एंड व्हाट सब्जेक्ट्स यू वांट टू डू एंड लाइक यू वांट टू एनरोल इन. और उसमें फिर जो आपके वो वाले सब्जेक्ट्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर करवा रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल. आई मीन इट्स नॉट जस्ट द US, बट हो सकता है कि आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए बेहतर चाइना है, उसके लिए बेहतर UK है. मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, यू नो ही इज़ वर्किंग एट द लोकल 7-Eleven टू फंड हिज स्टडीज़ एट द सेम टाइम. वहाँ से 7-Eleven पे काम करके कैशे पे काम करता है, यू नो ही फंड्स हिज स्टडीज़ एंड his university is ranked really high in the world, and he's doing all of this by himself. So point being कि आपके लिए जो अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि US है, ये ज़रूरी नहीं है कि आईवी लीग हो या ऑक्सफोर्ड हो या केम्ब्रिज हो. हो सकता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ पाकिस्तान में रहना ही है. आप नस्ट जाएँ, आप लम जाएँ. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू, राइट. अगर आप फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में मैं एक्टिविस्ट बनूँ, मैं यहाँ पे सोशल चेंज लाऊँ, मैं पॉलिटिशियन मैं बनूँ, इन सब चीज़ों के लिए यही बेहतर होता है कि आप पाकिस्तान में ही रहें, यहाँ पे अपने रूट्स आप ग्रो करें, यहाँ पाकिस्तान के बारे में आप ज़्यादा सीखें. उसके लिए यही बेहतर है कि आप यहीं पे रहें. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, उस हिसाब से आप पहले से सोचना शुरू कर लें इन एडवांस, 3-4 years इन एडवांस, और उस हिसाब से आप प्लान भी कीजिए. और अगर यूनिवर्सिटीज़ हम टारगेट करें तो दिसंबर इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग, व्हेन द यूनिवर्सिटीज़ ओपन देयर एप्लीकेशन. Well, so December is when the deadline is. So you write your applications in advance and you submit them before the December 31st deadline. All right. So इसके अलावा ये कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, आपके पास अब फंडिंग नहीं है, आप उसको either you can apply on scholarship, this is the best way, maybe you get the scholarship and you go and study, and there is another way, the way you chose, that you are managing it on your own, or university actually मुझे financial aid it gives you financial aid. Okay, so ये दोनों में क्या difference है? So basically scholarships, when we use the word scholarship, use that to denote कि when you're receiving money on basis of merit,
कि you're really accomplished and the university really likes that, आम तौर पे ये scholarship नहीं देती, but आप deserving हैं तो आपको scholarship दे रही है, right? And usually this is done in middle tier universities, not in top tier universities. It's done in middle tier universities to attract top applicants जिनके पास पैसे नहीं हैं. A lot of the top tier universities in the US, what they do is that they practice something called the financial aid system, which basically says that it's really competitive to get in. But if you can get in, if you can secure admission to these top universities, to Harvard, to Stanford, Yale, MIT, Princeton, if you can secure admission and आपका दाखला हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि leave it to us. We will cover all expenses for you because you were deserving and you got admission to this college. So that's called financial aid, और वो मुझे मिली हुई है स्टैनफोर्ड की वजह से. And उसका बेसिक ये है कि something to keep in mind is that if you are applying for financial aid, it does become difficult for you to get acceptance because फिर वो आपको admission नहीं देते. If they don't have that money, and अक्सर वो international students के साथ वो बहुत discriminate करते हैं. If you don't have that money, then वो आपको दाखला ही नहीं देंगे in the first place. And this actually gives an advantage to students who do have the money, who can pay $60,000-$70,000 a year. चाहे पाकिस्तान से apply करें, they're applying from international places. If you can afford, then they'll actually give you more of an advantage in getting in. So it does become harder for you to get in if you're asking for financial aid. But हाँ, अगर आपका दाखला हो जाए तो फाइनेंशियल आपको पूरी दे देंगे. So अगर उनको लगता है कि अच्छा आप में वो पोटेंशियल है, then they don't let you go just because of the finances. Yeah. और दिस इज यस. सो एक्चुअली ये होता है कि आप अपनी जो भी प्लान करते हैं उसके लिए फर्स्ट यू राइट डाउन योर लिमिटेशंस कि आप किस तरह से अप्लाई करें, आपकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्लान करना है. So it depends. Two cases are entirely different cases. Once you have the scholarship and once you don't have the scholarship, and the way you can manage it depends entirely on you. Yeah. Okay. So इसके अलावा ये कि अगर मुस्तफ़ा आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है और फिर भी you can survive with the aid you are given. Well, so like I said, or you need universities in the something US from your don't give parents. scholarships. वो नहीं देते scholarships. हाँ, but I'm talking about कि आपका स्कॉलरशिप नहीं है और आपको Financial aid मिली है. So you can fully like survive on it. Your accommodation, your studies and everything are everything Yeah. is So जितना आपको चाहिए, if you need let's say 80%, let's say आप हर साल आप 5 lakhs दे सकते हो, 5 lakh रुपीज़ आप दे सकते हैं कॉलेज को, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो वो 5 lakhs ही लेंगे आपसे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे. ठीक है. अगर आप 0 दे सकते हो तो आपसे 0 लेंगे. वो 100% देंगे, उसके ऊपर से भी 120% देंगे कि आपका अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, वो सारा कुछ सेटिस्फाई हो जाए. आपका कोई ये ना रहे पीछे कि इस चीज़ की वजह से you cannot concentrate on your main. Exactly. So they try to make it as comfortable for you as possible. वो जितना आपको aid चाहिए वो दे देते हैं आपको. Yeah. So all those who are actually looking forward to apply, I hope कि मुस्तफ़ा की जितनी भी टॉक थी, मुस्तफ़ा की जितनी बातें थी, they are a sort of inspiration for you and they must be very helpful in finding your way and writing down your timelines and motivations. इसके साथ ही we are signing off from today's episode of Let's Pep Talk. Do subscribe to our channel, do like us on Facebook and do follow us on Instagram and all the links of social media handles are given below. Huge shout out to Let's Pep Talk. Do subscribe.